Are you ready for one of the biggest events for all the techies around the globe? The Grand Coding Contest. It's a place for all goodies, gadgets, and prizes worth 10 lakhs. Grab your semicolons and jump into the battlefield and register now. We have learned about insertion in linked list, how to traverse a linked list, and how to delete a particular node in a linked list. So let's start with first including the library. So hash include and using namespace, then making our main function first. Now in the previous video as we discussed, हमें linked list की node को create करने के लिए एक structure बनाना पड़ेगा, right? जिसके अंदर हम value member भी add करेंगे and then we will add the pointer to our next node. So let's create that structure. Name of the structure will be node. Then there will be a member called value. And the type of the value will be the kind of linked list you want to have. Let's say we are creating the int kind of linked list, so यहाँ पे value का जो type होगा that will be of int, and then there will be a pointer of type node only, because हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक node दूसरी node को refer कर रहा हो, right? So the pointer that we are using is of node type only. So यहाँ पे we will have a node type pointer and the name of the pointer will be node. इसके बाद लेट्स से थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इजी करने के लिए लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर आल्सो. सो स्ट्रक्चर के लिए वी आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर एंड वी आर पासिंग वैल्यू इन इट. लेट्स से हम जब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर का, तो हम साथ में वैल्यू भी पास करेंगे सो दैट हमें अलग से इसे इनिशियलाइज करने का जरूरत ना पड़े. तो वी विल से दैट दिस डॉट वैल्यू, और हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, or you can use this keyword also, and then you will say that the pointer next is initialized with null for now, because हमें नहीं पता कि next node होगी या नहीं होगी, and होगी तो उसका एड्रेस क्या होगा. that is why अभी के लिए constructor में we will initialize it to null, and then in our code we can initialize it with the right value. Now in our main code, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वी वांट आवर हेड पॉइंटर, बिकॉज हेड पॉइंटर के थ्रू ही हम अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं. हेड पॉइंटर इज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ आवर लिंक लिस्ट. सो जहाँ से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है उस नोड का जो एड्रेस होगा, जो पॉइंटर उस एड्रेस को स्टोर करेगा, इट इज नोन एज द हेड पॉइंटर. सो उसका भी जो टाइप होगा इट विल बी ऑफ नोड ओनली, क्योंकि जो पॉइंटर का टाइप है वो एक नोड टाइप के स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है वो स्टोर करने के लिए यूज हुआ है. So that is why the type of the pointer will be node asterisk only. And let's say अभी के लिए हम इसे initialize करते हैं null से. Now next thing हमें क्या करना है, हमें node object create करना है, right? हमें अगर insertion करनी है अपने linked list में, सबसे पहले हमें उसका जो node होगा वो create करना पड़ेगा. So to create a node we will use the new operator. So let's say हमने यहाँ पे एक object create किया using the new operator. So new node, and यहाँ पे हमें value pass कर सकते हैं because we have a parameterized constructor in our structure. So let's say जो value मैं pass कर रही हूँ that is 1, and let's say एक और एक node create कर लेते हैं, इसका नाम होगा m, new node, and यहाँ पे value pass कर रहे हैं 2. अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट जो हेड है वो मेरी स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करने लग जाए, एंड द स्टार्टिंग नोड इज n. सो आई विल से हेड इज इक्वल टू n, क्योंकि जो n है मेरा वो ऑलरेडी एक एड्रेस स्टोर करता है, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर. हमने न्यू कीवर्ड यूज करा है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. सो इट इज अ पॉइंटर, दैट मीन्स हम एक पॉइंटर को एक दूसरे पॉइंटर से इनिशियलाइज कर रहे हैं. सो ये तो हो गया मेरा हेड का इनिशियलाइजेशन. नाउ आई वांट कि मेरे पास n जो है, n नोड जो है, द स्टार्ट ऑफ माई नोड, दैट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू m नोड, द नेक्स्ट नोड. तो मैं क्या बोलूंगी, n का जो नेक्स्ट नोड है उसमें वैल्यू डाल दो m. That means I am saying head जो है वो n को पॉइंट कर रहा है, n जो है वो m को पॉइंट कर रहा है, राइट? एंड m के आगे अभी तक कोई नोड नहीं है. दैट मीन्स जो m का नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट विल बी इनिशियलाइज टू नल, जैसा कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर में लिखा है. सो दिस इज द इंसर्शन बेसिकली, और यू कैन से द क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट. नाउ अब ये लिंक लिस्ट तो बन गई, अब हम इसे ट्रेवर्स कैसे करें. सो हम क्या कर सकते हैं,
I will create a temp, let's say temp or traverse pointer and I will initialize it with head, क्योंकि अपने head को मुझे कभी change नहीं करना. Please remember this, जो आपका head pointer है, it is very crucial. So always try to make a another pointer जिसके through आप traverse कर रहे हो या जिसके through आप लिंक लिस्ट में कोई भी अपडेशन या डिलीशन कर रहे हो, बट नेवर चेंज योर हेड पॉइंटर, बिकॉज वंस इट इज चेंज आप उसे नहीं ठीक कर पाओगे, राइट? बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द स्टार्ट ऑफ योर नोड. देन हेड पॉइंटर इज द ओनली पॉइंटर जहां से आपको पता लग सकता है कि आपकी लिंक लिस्ट कैसे स्टार्ट हो रही है, until and unless ये एक डबली लिंक लिस्ट हो and you can traverse back to the linked list. So always try to make a copy of your head pointer and then do all the things that you want to do with your linked list. So यहाँ पे मैंने एक traverse करके एक pointer create किया है. Now I am saying while this traverse is not equal to null, that means जब तक मेरे पास वैल्यू प्रेजेंट है, नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट है, तब तक लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते रहो. ओके, देन अब मुझे चाहिए कि मुझे स्ट्रक्चर की वैल्यूज प्रिंट हो. आई डोंट वांट टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर, आई जस्ट वांट द वैल्यू ऑफ माय लिंक लिस्ट. सो आई विल से ट्रेवर्स एंड वैल्यू एंड इसको सी आउट कर देते हैं, राइट? सो जब ये वैल्यू ट्रेवर्स हो जाएगी, नाउ दैट मीन्स जो भी मेरा पॉइंटर इस टाइम पे जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा था उसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट करा लिया. नाउ आई वांट कि अब जो मेरा ये ट्रेवर्स पॉइंटर है ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाए. दैट मीन्स आई हैव टू अपडेट दिस पॉइंटर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल से ट्रेवर्स इज इक्वल टू ट्रेवर्स नेक्स्ट. सो हियर व्हाट आई एम सेइंग कि करंटली जिस भी नोड को पॉइंट किया जा रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट मेंबर है उससे मुझे अपडेट करना है अपनी ट्रेवर्स पॉइंटर को. दैट मीन्स आई एम मूविंग अहेड इन द लिंक लिस्ट. सो दिस इज द बेसिक कोड. ये एक व्हाइल लूप है जो आपको यूज करना पड़ेगा ट्रेवर्स करने के लिए लिंक लिस्ट को, एंड इट इज क्वाइट सिंपल. इसका सिंपल मतलब यही है कि आप इंस्टेड ऑफ डूइंग आई प्लस प्लस यू आर चेंजिंग योर पॉइंटर वेरिएबल जो जिसके थ्रू आप ट्रेवर्स कर रहे हो टू द नेक्स्ट ऑफ द नोड. सो इसके थ्रू आप ट्रेवर्स कर सकते हो. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर कोड. So as you can see, the answer is 1 and 2. That means our code is perfectly working fine, and that's how you can create your linked list and you can traverse it. Now to delete your linked list, to delete a node in your linked list, what you can do is you can play with pointers. Now let's say I want to delete the first node. So मैं क्या करूँगी, I will say head should start pointing to m instead of n, right? And then I will say delete my n pointer. So जिस भी वेरिएबल को आप न्यू ऑपरेटर के थ्रू जनरेट करते हो, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट करते हो, यू कैन डिलीट और यू कैन रिलीज द मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर. सो सबसे पहले मैंने जो अपना हेड पॉइंटर है उसे अपडेट किया. नाउ माय लिंक लिस्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम m इंस्टेड ऑफ n, एंड देन आई एम डिलीटिंग माय नोड. नाउ लेट्स से अब मेरी लिंक लिस्ट क्या चेंज हो जाएगी. सो कॉपी पेस्ट द कोड and let's see what will happen. And of course आपको ट्रेवर्स को दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा with your head variable क्योंकि वो चेंज हो चुका है. So let's run this code. Now as you can see, पहले print हुआ 1 and 2 and in the next iteration only 2 is there. So we have deleted our node. And that's how this is the basic operation. We have seen insertion, traversing a linked list, and deletion also. So this is it for today's video. We covered about insertion in linked list, how to delete a particular node from linked list, and how to traverse a linked list fully. And you can start solving problems like find a value if it is present in linked list or not, or what is the size of the linked list, and insertion at the end and at the front of the linked list, at the middle of the linked list. You can start solving such problems by yourself. But from the next video, I'll be covering about the questions which are being asked in companies like Microsoft and Google based on linked list, so that you will have a better confidence on this particular data structure. So I hope you like the video, and if yes, please like and subscribe our channel. So see you in the next video. So these were the basic operations, and in the next video, we will be covering about some standard problems that are and in the next videos, I will be covering about the standard problems related to linked lists which are being asked in interviews in companies like Google and Microsoft. And of course, don't forget
So this is it for today's video. We covered about insertion in linked list, how to delete a node in linked list, and how to traverse the linked list basically. So you can start solving problems like find a particular node in a linked list, find a particular value in a linked list, and insertion in the front, insertion at the end of the linked list. So these are the basic fundamental questions of linked list. But in the next videos, I'll be covering about some standard So this is it for today's video. We covered about insertion in linked list, deletion in linked list, and how to traverse a linked list using pointers. So you can start practicing questions like insertion at the end of the linked list and at the front of the linked list, or find a particular value if it is present in the linked list or not. So you can start some basic fundamental questions. But in the next video, I will be starting with some standard questions which are being asked in interviews like in companies like Google and Microsoft, so that you will have a better confidence in this particular data structure. But this is it for today's video, and I hope So this is it for today's video. We covered about how to insert a particular node in a linked list, how to delete a node in a linked list. Also, the full stack web development course provided by Newton School is also live. So you can check out the link which is available in the description box, or you can check out their platform also. Its link is also there in the description box. So you can check out Newton School, and if it is useful. Also, full stack web development course provided by Newton School is live now. So you can check out the link which is available in the description box, or you can directly check out their official website. There is an enroll now button in the full stack web development course also. Also, full stack web development course provided by Newton School is live now. So you can either check the link which is provided in the description box to enroll in the course, or you can check out the official website and get more details on it. So hope you liked the video, and see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Okay.